अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू द क्लास ऑफ स्लेट फिजिक्स। As you know that we are continuing with waves portion of AS physics. The topic that we are going to discuss is Doppler effect, right? So what is Doppler effect? आप में से शायद कुछ लोगों को पता हो, लेकिन आपको मेरा ख्याल है कि वीडियो से पहले ही कुछ फेयर आइडिया तो होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को ना बच्चों क्यूरियस होना चाहिए अबाउट द न्यू कॉन्सेप्ट्स। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो यू मस्ट रीड बुक्स बच्चों। ठीक है, सो डॉपलर इफेक्ट में कुछ ऐसा होता है कि जो फ्रीक्वेंसी आप लोग हेयर कर रहे होते हैं, लिसन कर रहे होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। कब? जब उस फ्रीक्वेंसी का सोर्स, जब साउंड सोर्स आपके रिस्पेक्ट से मूव कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, लिसन दिस साउंड। सो आपने इस साउंड में सुना कि एक कार जो कि एक मूव कर रही है, जैसे जैसे कार मूव करती है उसकी साउंड चेंज हो रही है, राइट? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कार आपकी तरफ आ रही है या कार आपसे अवे जा रही है, तो आप कहेंगे कि ये साउंड इफेक्ट तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कार इज गोइंग अवे फ्रॉम अस, राइट? तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ कार की मूवमेंट की साउंड सुन के बता सकते हैं कि ये आपकी टुवर्ड्स आ रही है या अवे जा रही है। हुआ ये कि जब सोर्स विच इज द कार इटसेल्फ इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द लिसनर, जो कि आवाज को सुन रहा है, ठीक है, जब सोर्स और लिसनर एक दूसरे के रिस्पेक्ट से मोशन में होते हैं तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। ठीक है, अच्छा, लाइट के केस में इट इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, साउंड के केस में तो हम फ्रीक्वेंसी को हेयर करते हैं, लिसन करते हैं। जनरली दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो लाइट हो या साउंड हो, वी विल यूज द वर्ड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। सो लेट्स डिफाइन डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट इज change in observed frequency due to relative motion of source, due to relative motion of source and observer। ठीक है, नाउ व्हाट इज सोर्स? देखिए, अगर एक कार अपने हॉर्न को कॉन्स्टेंटली प्रेस करके रखती है और वो आपकी तरफ आ रही है, उसका हॉर्न काफी इची हो जाता है, उसकी आवाज काफी श्रिलिंग हो जाती है, बिकॉज उसके केस में उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वो हाई पिच साउंड बन जाती है। ठीक है, आपको डिस्टर्बिंग सी साउंड सुनाई देती है। ठीक है, सो डॉपलर इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व आइदर इन केस ऑफ साउंड वेव्स एंड इन केस ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, क्या इसके अलावा डॉपलर इफेक्ट नहीं होता? बिल्कुल होता है। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट का यूज मेडिकल में है, वॉरफेयर में है, लेकिन जनरली वी विल गेट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू साउंड वेव्स और लाइट वेव्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साउंड वेव्स को हम हेयर करते हैं या लिसन करते हैं, ठीक है, और लाइट वेव्स को हम ऑब्जर्व करते हैं या व्यू करते हैं। इसके लिए एक जनरल वर्ड यूज हो रहा है, observed, right? So Doppler effect is change in observed frequency due to relative motion of source and observer। So frequency के लिए हमने word use किया बच्चों observed frequency, right? Okay, so ये सिर्फ तब ऑब्जर्व होगा जब सोर्स और ऑब्जर्वर का डिस्टेंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट से आइदर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, देयर रिलेटिव स्पीड इज जीरो, इन दैट केस डॉपलर इफेक्ट विल नॉट बी ऑब्जर्व, राइट? सो लेट्स स्टडी डॉपलर इफेक्ट इन साउंड वेव्स। ठीक है, this is case number 1 in which you can see an ambulance which is at rest. The ambulance is at rest and the person is also at rest, right? याद रहे कि हमारे सिलेबस में जो लिसनर है, जो ऑब्जर्वर है, that will always be at rest। ठीक है, तो हमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उस केस में ऑब्जर्वर will always be at rest। Now in case 1
the source of sound is the siren of ambulance. ठीक है? So this ambulance is source of sound. And what is the sound wave itself? Itself, the sound waves are the waves emitted by the siren of this ambulance. Right? Okay, what is the velocity of this ambulance? Its initial velocity is 0. Right? So what happens is कि जब ये एम्बुलेंस साउंड वेव्स एमिट करना स्टार्ट करेगी, दो साउंड वेव्स विल प्रोग्रेस फ्रॉम द सायरन towards the person at speed of sound which is approximately 330 meters per second, right? So यहाँ पे मैं sound waves को wave fronts की form में draw कर रहा हूँ, and these wave fronts are progressing towards a steady observer, the observer who is standing at rest. ठीक है? So these are the wave fronts. Now what is the value of actual frequency of source? The actual frequency of source is Fs, and let's call it frequency of source, right? And the frequency observed by the person, मैंने आपको बताया था sound के लिए भी हम observe का word ही use करेंगे, that is F naught. Let's call it observed frequency. ठीक है? Now keep in mind that ambulance and person both are at rest. ठीक है? Their relative speed, their relative velocity is 0. तो इस केस में Doppler effect observe नहीं होगा, right? So in this case, observed frequency is equal to the actual frequency of sound waves. ठीक है? So there is no obvious change in frequency. No change in frequency. राइट? अच्छा, इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट तक जो वेवलेंथ है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ साउंड, राइट? इस केस में साउंड की वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी बिकॉज देयर इज नो डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व. सो दिस वेवलेंथ विल आल्सो रिमेन अनचेंज. सो वी हैव concluded that in this case observed frequency is equal to actual frequency. There is no change in frequency, so Doppler effect is not observed. Let's move to the next case, case number 2. And in this case, this ambulance is progressing towards a stationary observer, right? In this case, ambulance is moving. Ambulance is moving towards static observer, right? And ambulance is moving towards right hand side, and let's call this velocity Vs, right? Vs is velocity of source, and source of wave in this case is ambulance. ठीक है? Siren ambulance के साथ attached है ना? It is moving along with ambulance, right? And once again, the observer, the person who is going to listen the sound is at rest, right? Now what is happening, इस point को आप जरा अगर ध्यान से understand कर लें, Doppler effect clear हो जाएगा. ये हो रहा है कि sound waves are progressing towards right. ठीक है? Sound wave किस side पर travel कर रही है? Sound is traveling towards right hand side. ठीक है? और ambulance भी right side पर travel कर रही है. So हो ये रहा है कि ये एक वेव फ्रंट जो कि पर्सन की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, एम्बुलेंस नेक्स्ट वेव फ्रंट एमिट करने से पहले इट कम्स टुवर्ड्स द प्रीवियस वेव फ्रंट, राइट? वेव फ्रंट ट्रैवल कर रहा है, एम्बुलेंस नेक्स्ट वेव या नेक्स्ट वेव फ्रंट ट्रांसमिट करने से पहले इट मूव्स टुवर्ड्स द वेव फ्रंट, राइट? सो इन दिस केस द डिस्टेंस बिटवीन वेव फ्रंट्स विल squeeze down, that distance will reduce. So what will happen to the distance between the wave fronts? That distance is going to reduce as compared to the previous case in which ambulance was at rest, right? So here I am drawing the wavefronts of sound which are apparently more closer to each other. So these are the wavefronts of sound which are considerably closer to each other. मैं जान के थोड़ा सा क्लोज बना रहा हूं ताकि आप फर्स्ट केस में और सेकंड केस में इजीली डिफरेंशिएट कर पाए. So these are the wavefronts of sound, and you can easily judge that what is happening to the distance between two consecutive wavefronts. This distance is
reducing. It means that observed wavelength has reduced. This is lambda naught, which is less than the actual wavelength. So, if you compare it with the previous case, what has happened? The wavelength is reduced. Frequency and wavelength have inverse relationship, so definitely observed frequency is greater now, right? एक और reason frequency ज़्यादा होने का ये है कि now in the same area you can count the waves. There are more number of waves in the same time. So you can easily say that observed frequency is greater than the actual frequency, right? So in case of towards, observed frequency increases, so it is greater than the actual frequency, right? And what will happen to observed wavelength? Observed wavelength is less than the actual wavelength, right? So let's progress towards the next case, which is case number 3. And in case number 3, this ambulance, this source is moving. आप देख सकते हैं diagram में left पे move कर रहा है, right? Ambulance is moving. Ambulance, which is a source, is moving away from static observer. Away from observer, right? So let's write down the direction. The direction of ambulance in this case is towards left hand side, that is away from the person. Its velocity can be referred as Vs. Okay? Okay, once again this person is at rest, right? Now the sound waves are once again progressing towards the person. Sound is traveling towards right, but ambulance is going away from the person. The distance between the static person and ambulance is increasing, right? इसका मतलब ये है कि ये एक wavefront है which is progressing towards the person. Next wavefront emit करने से पहले this ambulance moves quite a bit far from the person. So what will happen to the distance between the wavefronts? In this case, the distance between wavefronts is going to increase, right? So in this case, as compared to the previous one, I will draw the wavefronts which are further apart from each other. ठीक है? इस case में you can clearly see that distance between wavefront is considerably more than the previous distance. So what does the distance between these wavefronts show? This shows that observed frequency is going to reduce. Why? Because observed wavelength has significantly increased. ठीक है, मैं जान के यहाँ पर significant का word use कर रहा हूँ ताकि आप इसको compare कर सकें. This is observed wavelength which is greater than the actual wavelength. तो अगर observed wavelength increase होगी, what will happen to observed frequency? Observed frequency will be less than the actual frequency f, right? So this is how you understand Doppler effect. अब जरा understand करें. अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं and you are waiting for the train. Now it's very common, आप ऑरेंज लाइन ट्रेन पे तो बैठे ही होंगे being a लाहौरी. अगर ट्रेन अप्रोच कर रही है तो उसका हॉर्न जो है वो श्रिलिंग साउंड एमिट करेगा, वो इची साउंड एमिट करेगा बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से थोड़ी ज्यादा है. और जब ट्रेन रिसीड करेगी व्हेन इट विल गो अवे फ्रॉम यू, ठीक है, उसकी साउंड जो है थोड़ा सा उसमें ग्रेव एंटर हो जाएगा, थोड़ा सा हाई पिच साउंड से लो पिच साउंड हो जाएगी, राइट? ओके, मूविंग ऑन. Let's understand the formula of Doppler effect. In fact, this formula will be given to you, and the formula is observed frequency f naught is equal to V over V plus minus Vs multiplied by the actual frequency Fs. Right? This formula would be there in the data. Now understand what are the variables representing. F naught is observed frequency. It is measured in hertz, right? V is frequency of waves. Sorry, velocity of waves. V is velocity of waves. ठीक है, किन waves की velocity? Sound के केस में sound wave की velocity, light के केस में light की velocity. It is measured in meters per second. Then you have Vs. Vs is velocity of source.
and the source here in this particular question was ambulance. ठीक है, source could be a star, source could be any moving object, right? And fs is the actual frequency of sound or the light at the time of emission. Okay, now this formula would be there. ये formula तो आपको given होगा data में, but how you have to use this formula, जरा यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर प्लस साइन भी है, यहाँ पर माइनस साइन भी है. ठीक है, नाउ वी इंटेलिजेंटली हैव टू डिसाइड कि आपने किस पॉइंट पर कौन सा साइन यूज करना है. दो ही तो केसेस हैं, एक केस है टूवर्ड्स का और एक केस है अवे का. ठीक है, सो टूवर्ड्स के केस में डिनोमिनेटर में याद रख लीजिएगा माइनस साइन आएगा. वाई, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं. लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला वंस अगेन. एफ नॉट इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस मल्टीप्लाइड बाय actual frequency VFS, right? What was happening in the case when the source was moving towards a static observer? The observed frequency was greater than the actual frequency. तो observed frequency को ज्यादा करने के लिए डिनोमिनेटर को रिड्यूस करना है, डिनोमिनेटर को स्मॉल करना है. तो डिनोमिनेटर तब छोटा होगा, उसका मैग्नीट्यूड तब लेस होगा जब डिनोमिनेटर में माइनस साइन आएगा. फॉर एग्जांपल 5 है और 4 है, अगर माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 आ जाएगा. डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी. इन दिस केस डिनोमिनेटर को रिड्यूस करना है ताकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए, राइट? सो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर, दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर में माइनस साइन आएगा. एंड व्हाट व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, इन दैट केस denominator will have plus sign. ठीक है, so your formula would be observed frequency f naught is equal to v over v plus vs multiply by actual frequency fs. ठीक है, याद रखने का तरीका देखें. a for away, a for addition. ठीक है, जब सोर्स अवे मूव करेगा तो डिनोमिनेटर में प्लस साइन आएगा. वंस अगेन रिकॉल करें, ए फॉर अवे, ए फॉर एडिशन. तो फॉर्मूला गिवन है, इवन डेरिवेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस. यू जस्ट हैव टू मेमोराइज इफ द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, डिनोमिनेटर में प्लस साइन, एंड व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, डिनोमिनेटर विल हैव नेगेटिव साइन, एंड दिस इज इट, राइट? नाउ वी आर इन अ परफेक्ट सिचुएशन टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, राइट? सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन. The question says that an ambulance emitting sound waves of frequency 2000 Hertz is moving at speed of 30 meters per second. ठीक है? So the actual frequency of sound is 2000 Hertz, is moving at constant speed of 30 meters per second. The speed of sound in air is 330 meters per second. ठीक है? खुद से assume नहीं करनी, जो speed given होगी वाली speed use करनी है. Determine the observed frequency of sound by a stationary observer. याद रहे, in your syllabus, observer is always at rest, right? If it is moving, number one, towards observer, right? याद करें, मैंने आपको कहा था कि towards के केस में डिनोमिनेटर में माइनस साइन आएगा and observed frequency is greater than the actual frequency, right? So let's write down the formula. Observed frequency f naught is equal to v over v minus vs multiplied by the actual frequency vs, right? Let's gather up the data. The value of actual frequency is 2000 Hertz. The velocity of waves is 330 meters per second. The velocity of source is 30 meters per second, and we have to find out the value of observed frequency, right? So just substitute the values in the formula. F naught is equal to V, which is 330 divided by 330 minus 30 multiplied by source frequency, which is 2000, right? Substitute the values in your calculators. 330 divided by 330 minus 30 multiplied by actual frequency 2000. This value is coming out to be exactly 2200 Hertz. ठीक है?
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब एम्बुलेंस हमें अप्रोच करेगी उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी हाई पिच हो जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड बन जाएगी. सो इन दिस केस यू कैन सी दैट sound frequency has been increased by amount of 200 hertz. Actual frequency 2000 थी, observed frequency 2200 hertz होगी, right? Now this is very important कि जिस वैल्यू से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी हमेशा उसी वैल्यू से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज नहीं होगी. आप कहते हैं कि इन केस ऑफ वे वैल्यू 1800 हो जाएगी, वो गलत है, बिकॉज एवरी टाइम यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला वंस अगेन. ठीक है. What is the value of observed frequency when the source, which is ambulance once again, is moving away from the static observer? So let's apply the formula once again. A for add, A for away. So this time denominator में plus sign आएगा. You will write F naught is equal to V over V plus Vs multiplied by actual frequency, which is Fs. Right? Let's substitute the values. F naught is equal to V, which is 330 divided by 330 plus 30 multiplied by actual frequency, which is 2000. Right? इसका आंसर 1800 नहीं है, इसका आंसर हमने फाइंड आउट करना है. So 330 divided by 330 plus 30 multiplied by 2000. This value is coming out to be 1833 hertz. 1833 hertz. And you can clearly see that this value has reduced by the value of, by the amount of 167 hertz. ये frequency reduce हुई है, माइनस साइन यूज कर रहा हूं, किस वैल्यू से रिड्यूस हुई है? 167 hertz. ठीक है. सो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि टूवर्ड्स के केस में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, वैसा ही हुआ. और अवे के केस में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज लेस देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. वी हैव कैलकुलेटेड एंड द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ अस, राइट? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वाज 2000. ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी फर्स्टली इज इंक्रीज्ड बाय 200 hertz when the ambulance was coming towards the static observer, and observed frequency is decreased by 167 hertz when the ambulance was moving away from the observer, right? Now the important thing is the ambulance had a constant velocity throughout, so Doppler effect was observed. तो जो आपकी observed frequency थी वो unchanged थी, throughout its value was 2200 hertz और throughout its value was 1833 hertz, right? टूवर्ड्स के केस में इसकी वैल्यू थी 2200 हर्ट्ज और अवे के केस में दिस वैल्यू वाज 1833 हर्ट्ज, एंड दिस वाज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, राइट? बट व्हाट इफ ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग और डिसेलरेटिंग? सो हियर यू हैव अ पर्सन हु इज ऑब्जर्वर एंड शी इज एट रेस्ट. शी इज अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, राइट? Firstly, the source, the sound source is coming towards this observer. Right? And it is simultaneously accelerating. ठीक है? As we know that observed frequency will be greater than actual frequency because object accelerate कर रहा है, इसकी relative speed of approach increase होती जा रही है. So ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी. इट मस्ट बी इंक्रीजिंग. ठीक है. ओके, नेक्स्ट केस. इन दिस केस द सोर्स इज वंस अगेन कमिंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, राइट? बट दिस टाइम इट इज decelerating. Let's say decelerating to rest. So what will happen in this case? In this case, observed frequency शुरू में maximum होगी because it's case of approach. It is case in which source is moving towards observer. ठीक है? But this will reduce. शुरू में observed frequency की वैल्यू maximum होगी. अब because क्योंकि ये रेस्ट पे आ रहा है तो इसकी relative speed 0 को approach कर रही है, it will gradually reduce
एंड अल्टीमेटली जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आएगा ये वैल्यू रिड्यूस होकर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी. सो आई एम राइटिंग इट विल रिड्यूस टू द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी which is fs, right? Okay, in the third case, the source of sound is moving away from static observer and simultaneously it is accelerating. Okay, so when the source is moving away and simultaneously it is accelerating, what will happen to the observed frequency? In this case, observed frequency will decrease because it's a case of away. ठीक है? Or it will decrease and decrease. Magnitude of decreasing will increase. ठीक है? So it will be constantly decreasing as the relative speed of going away is getting more and more. ठीक है? So it will be more decreasing with time. ठीक है? And next, when the source is moving away once again, away भी जा रहा है और simultaneously decelerate भी कर रहा है. ठीक है? अवे के केस में तो हमें पता है कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. ठीक है? अच्छा, लेकिन क्योंकि ये ग्रेजुअली रेस्ट पे आ रहा है तो इसकी रिलेटिव स्पीड का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, इस वजह से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट डॉपलर इफेक्ट इन केस ऑफ साउंड वेव्स. नाउ वी विल सी डॉपलर इफेक्ट इन लाइट वेव्स. सो लेट्स डिस्कस डॉपलर इफेक्ट इन लाइट वेव्स. राइट? So before studying light waves, you must know that all light waves, rather all electromagnetic waves, travel at same speed in vacuum, and that value of speed is c, which is 3 multiplied by 10 raised to power 8 meters per second. ठीक है? Other than that, you must know what are the extremes wavelength. Extreme के ऊपर wavelength देखें. इस साइड पर extreme पर जो wavelength है that is blue, और इस extreme पर जो wavelength है that is red. So generally blue is referred as 400 nanometers और जो red की mean value है that is approximately 700 nanometers. So the visible light spectrum ranges from 400 nanometers to 700 nanometers. ठीक है? अच्छा, इस arrow की direction में what is happening to frequency? So blue की तरफ, blue has shorter wavelength and frequency is more, तो इस direction में frequency is increasing. Right? अच्छा, डॉपलर इफेक्ट जनरली अर्थ के ऊपर आपको लाइट वेव्स में ऑब्जर्व इस वजह से नहीं होता बिकॉज लाइट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव वेलोसिटी बहुत कम है. सो दिस इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ स्टेलर ऑब्जेक्ट्स लाइक डिफरेंट स्टार्स एंड गैलेक्सीज. राइट? सो लेट्स इमेजिन कि देयर इज अ स्टार व्हिच इज emitting a wavelength of let's say 550 nanometers. ठीक है? 550 nanometers. If the star is moving towards Earth, जिसके लिए हमें परेशान होने की ऐसी जरूरत नहीं है बिकॉज टूवर्ड्स आ भी रहा है तो इट इज a lot of light years away from us. It is never going to collide with Earth. What will happen is, towards के केस में observed frequency is always greater than actual frequency and observed wavelength lambda is less than the actual frequency. So towards के केस में this will shift towards blue side and that is referred as blue shift. ठीक है? And what will happen in case of a star moving away from Earth? अगर star away move कर रहा है so its observed frequency is less than actual frequency. ठीक है? And its observed wavelength is greater than the actual wavelength. ठीक है? यहाँ पे मैं करेक्शन कर रहा हूं, दिस इज सिंबल इज लैम्डा. ठीक है? तो अगर ऑब्जेक्ट अवे मूव कर रहा है इसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है एंड ग्रेटर वेवलेंथ इज टुवर्ड्स विच साइड? टुवर्ड्स लेफ्ट. सो इसका मतलब ये है कि अवे के केस में देयर इज ऑलवेज विच शिफ्ट? रेड शिफ्ट.
ठीक है. So let's generalize the things. Blue shift का मतलब है object is moving away from us and observed frequency is greater and observed wavelength is less. और red shift का मतलब ये है कि object is moving away from us, right? Observed frequency is less, observed wavelength is more, and red has greater wavelength. Let's apply this concept on this question. So here you have a question. A distant star, but stars are very, very away from us, right? A distant star emitting light of wavelength 550 nanometer is moving away. Away का केस है, माइंड में सोच ले के कौन सा शिफ्ट होगा. Is moving away from Earth at speed of 8 into 10 raised power 6 meters per second. Determine actual frequency. So how you will determine the actual frequency of these waves? आप इसके ऊपर velocity का formula apply करेंगे. You will write c equals f lambda. आप v भी लिख सकते हैं, आप c भी लिख सकते हैं. So c is speed of light in vacuum and its value is 3 multiplied by 10 raised to power 8. Actual frequency find out करनी है and the value of wavelength is 550 nanometers. Nano is 10 raised to power minus 9. Right? Let's substitute the values in the calculator and find out the value. 3 multiplied by 10 raised to power 8 divided by 550 multiplied by 10 raised to power minus 9. So this value is coming out to be 5.45 multiplied by 10 raised to power 14 hertz. Right? So this is the value of actual frequency without Doppler effect. Right? Part 2 देखें. Find out the value of observed frequency. जरा नोट करें कि स्टार किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ. स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ. तो ए फॉर एड, ए फॉर एडिशन एंड ए फॉर अवे. डिनोमिनेटर में कौन सा साइन आएगा? डिनोमिनेटर में प्लस साइन आएगा. लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला. आप लोग लिख रहे हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इज इक्वल टू वी ओवर वी प्लस वी एस मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, जो कि आपने पार्ट 1 में फाइंड आउट की. लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. एफ नॉट इज इक्वल टू वी विच इज 3 multiplied by 10 raised to power 8 divided by 3 multiplied by 10 raised to power 8 plus velocity of source, which is a star itself, and its velocity is 8 multiplied by 10 raised to power 6 multiplied by actual frequency, which is 5.45 into 10 raised to power 14. Let's find out the value of observed frequency. So it is 3 multiplied by 10 raised to power 8 divided by 3 multiplied by 10 raised to power 8 minus 8 multiplied by 10 raised to power 6 multiplied by actual frequency, which is 5.45. Sorry, the sign in denominator is plus sign. 5.45 multiplied by 10 raised to power 14. So this value of observed frequency is coming out to be 5.31 multiplied by 10 raised to power 14 hertz. ठीक है? We can easily say that observed frequency is less than actual frequency. अवे के केस में observed frequency actual frequency से less होती है. ठीक है? And in the last part you have to find out the value of observed wavelength. Once again you will apply the formula of velocity of waves. Velocity of wave c equals f lambda. और यहाँ पे हम observed frequency और observed wavelength की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. Okay, c is once again 3 multiplied by 10 raised to power 8. F naught is the value of observed frequency. It is 5.31 into 10 raised to power 14 multiplied by observed wavelength lambda naught. ठीक है? So 3 multiplied by 10 raised to power 8 divided by 5.31 into 10 raised to power 14. This observed wavelength is coming out to be 5.65 multiplied by 10 raised to power minus 7.
ठीक है, this can be further written as 565 multiplied by 10 raised to power minus 9 meters, and this is 565 nanometers. ठीक है, what was the actual frequency, sorry, actual wavelength was 550 nanometers. Now the observed wavelength is 565 nanometers. So wavelength has increased by the value of 15 nanometers, और increased wavelength का मतलब है it is moving towards red. ठीक है, so 550 से इंक्रीज होके आपकी ऑब्जर्व वेवलेंथ 565 नैनोमीटर्स हो गई है. इट हैज स्लाइटली शिफ्टेड टूवर्ड्स रेड. ठीक है, इसी वजह से स्टार का अपेरेंट कलर जो है वो चेंज हो सकता है. देखिए, अपेरेंट कलर और फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर ऑफ स्टार, लेकिन डॉपलर इफेक्ट से वो फर्दर अपनी वैल्यू से चेंज हो सकता है. राइट, सो दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑफ डॉपलर इफेक्ट इन लाइट. ठीक है, for this you need more practice, so stay tuned for the past paper videos. Thank you.